Hello everyone. Today we will be discussing the next topic from pathology inflammation, which is chronic inflammation. Chronic inflammation is prolonged type of inflammation which is characterized by mononuclear infiltration where there are infiltrations of macrophages, lymphocytes, plasma cells, and this leads to simultaneous tissue destruction and then further repair. In the repair, there will be angiogenesis and fibrosis, and it may also be preceded by acute inflammation. Stimuli that causes chronic inflammation is persistent infections like TB, tuberculosis, Treponema pallidum, T. pallidum, fungi, and virus infections, which leads to type 4 hypersensitivity. Autoimmune reactions, prolonged exposure to toxic agents like silica and foreign materials. Mediators that are involved in chronic inflammation are macrophages and their interaction with the T cells. Macrophages are the dominant cells, and their interaction with T cells causes chronic inflammation. The Th1 cells secrete INF gamma, and this causes macrophage classical activation, which is pro inflammatory. Th2 cells secrete interleukins IL4, IL13, and this causes the alternative activation of macrophages, which is repair and anti inflammatory. There can be few outcomes of chronic inflammation, which is scarring, amyloidosis, neoplastic transformation, like chronic HCV infection, which further causes chronic inflammation, and hepatocellular carcinoma. There can also be further Helicobacter pylori infection, which causes chronic gastritis and further gastric adenocarcinoma. सो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में क्या होता है? प्रोलॉन्ज्ड इन्फ्लेमेशन होता है जिसमें मोनोन्यूक्लियर इन्फिल्ट्रेशन होती है. मोनोन्यूक्लियोसाइट्स जैसे कि मैक्रोफेजेस, लिम्फोसाइट्स एंड प्लाज्मा सेल्स. इसकी वजह से टिश्यू का डिस्ट्रक्शन होता है और उसके बाद टिश्यू का रिपेयर भी होता है. रिपेयर में एंजियोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड वेसल्स होगा और फाइब्रोसिस होगा. एंड ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन एक्यूट इन्फ्लेमेशन के बाद भी हो सकता है. कुछ स्टिमुलाई है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के, वो है परसिस्टेंट इन्फेक्शन जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस, ट्राइपोनेमा पैलिडम, फंजाई एंड वायरस इन्फेक्शंस, जिनकी वजह से टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी होता है. कुछ ऑटोइम्यून डिजीजेस हैं और कुछ टॉक्सिक एजेंट्स के एक्सपोजर से भी हो सकता है, प्रोलॉन्ज एक्सपोजर से, फॉर एग्जांपल सिलिका, एंड अगर कोई फॉरेन मटेरियल है तो. नाउ मीडिएटर्स जो कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में होते हैं वो है मैक्रोफेजेस डोमिनेंटली और उनका इंटरेक्शन टी सेल्स के साथ. इसकी वजह से क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होता है. टी सेल्स में टी हेल्पर सेल्स 1 अगर है वो INF गामा रिलीज करते हैं जो कि मैक्रोफेजेस का क्लासिकल एक्टिवेशन करते हैं प्रो इन्फ्लेमेटरी. और अगर टी हेल्पर सेल्स 2 हैं तो वो इंटरल्यूकिन्स रिलीज करते हैं जैसे IL4, IL13. और इसकी वजह से मैक्रोफेजेस का ऑल्टरनेटिव एक्टिवेशन होता है. इसमें रिपेयर और एंटी इन्फ्लेमेटरी मैकेनिज्म होगा. नाउ कुछ आउटकम्स हैं क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के जैसे कि स्कारिंग, अमाइलॉइडोसिस, न्यूप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन. इसमें दो तरीके से न्यूप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन होता है, या तो क्रॉनिक HCV इन्फेक्शन या फिर हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन. अगर HCV इन्फेक्शन है तो उसके बाद क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन और फाइनली हेपेटोसेल्यूलर कार्सिनोमा के चांसेस हो सकते हैं. और हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन के बाद क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस होता है, जिसके बाद अगर प्रोग्नोसिस वर्स हुई तो गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा भी हो सकता है. Now discussing wound healing. In wound healing, there are few tissue mediators like FGF, fibroblast growth factor, TGF, transforming growth factor beta, VEGF, vascular endothelial growth factor, PDGF, platelet derived growth factors, metalloproteinases, and epidermal growth factor EGF. In FGF, the FGF's role is to stimulate angiogenesis. In transforming growth factor beta, its role is also to stimulate angiogenesis along with fibrosis. The VEGF, vascular endothelial growth factor, also stimulates angiogenesis. And the platelet derived growth factor, it is secreted by activated platelets and macrophages.
and in and it induces vascular remodeling and smooth muscle cells migration. It also stimulates fibroblast growth for collagen synthesis. Metalloproteinases causes tissue remodeling, and lastly, the EGF stimulates cell growth via tyrosine kinase. Example: EGFR, epidermal growth factor receptor, and ERB1. सो वूंड हीलिंग में टिश्यू मीडिएटर्स होते हैं जैसे FGF, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, TGF बीटा, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा, वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर VEGF, platelet derived growth factor PDGF, metalloproteinases, and epidermal growth factor or EGF. The roles of these mediators are discussed here. So इन मीडिएटर्स की कुछ रोल्स हैं वुंड हीलिंग में, जैसे FGF जब आता है तो वो एंजियोजेनेसिस करता है, TGF बीटा जब आता है वो भी एंजियोजेनेसिस करता है प्लस फाइब्रोसिस, VEGF भी एंजियोजेनेसिस करता है, प्लेटलेट डिराइव ग्रोथ फैक्टर जो है प्लेटलेट से आता है, एक्टिवेटेड प्लेटलेट से और मैक्रोफेजेस से, और ये वैस्कुलर रीमॉडलिंग करता है और स्मूथ मसल सेल्स का माइग्रेशन कराता है। ये फाइब्रोब्लास्ट का ग्रोथ भी करवाता है कोलेजन सिंथेसिस के लिए। नाउ मेटेलोप्रोटीनेजेस में इसका काम है टिश्यू रिमॉडलिंग, और EGF सेल ग्रोथ कराता है टायरोसिन काइनेसिस के थ्रू, जैसे कि एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर EGFR एंड ERB1। नाउ phases of wound healing. There is inflammatory phase, which is up to 3 days after the wound. Proliferative phase, which is up to day 3 to weeks after wound. And remodeling, which is 1 week to 6 months after the wound. Now, the effector cells in inflammatory phase of wound healing is platelets, neutrophils, and macrophages. And the characteristic of this inflammatory phase is going to be clot formation, increased vessel permeability, neutrophils migration into the tissue, and macrophages that clear the debris 2 days later. The effector cells in proliferative phase are fibroblasts, myofibroblasts, endothelial cells, keratinocytes, and macrophages. The characteristic of proliferative phase is a deposition of granulation tissue, type 3 collagen, angiogenesis, epithelial cell proliferation, dissolution of clot, wound contraction, and this is mediated by myofibroblasts. If there is vitamin C and copper deficiency, this causes delayed second phase of wound healing. How to learn this? We can see that there is vitamin C in it, and there is a C in copper as well. So we can learn that from the C's, the second phase that also has a C in it, if these C's or vitamin C and copper are deficient, it will cause the delayed second phase of wound healing. Now there is the remodeling phase, and the effector cells in the remodeling phase are fibroblasts. Its main characteristic is type 3 collagen becoming into type 1 collagen and increase in the tensile strength of the tissue. There will be collagenases enzyme, and this requires zinc to function, and its function is to break down collagen type 3. Now if there is zinc deficiency, this will cause delayed wound healing. सो बेसिकली फेजेस ऑफ वुंड हीलिंग 3 होते हैं: इन्फ्लेमेटरी फेज, प्रोलिफरेटिव फेज एंड रीमॉडलिंग फेज। इन्फ्लेमेटरी फेज अप टू 3 डेज तक रहता है वुंड के, प्रोलिफरेटिव फेज 3 to वीक्स तक रह सकता है, और रीमॉडलिंग फेज 1 वीक से 6 मंथ्स तक रहता है वुंड के बाद। इन्फ्लेमेटरी फेज जो कि फर्स्ट फेज है वुंड हीलिंग का, इसमें प्लेटलेट्स आते हैं, न्यूट्रोफिल्स आते हैं, मैक्रोफेजेस आते हैं, और इस फेज में कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं? क्लॉट्स फॉर्मेशन होगा, वेसल्स का परमेबिलिटी बढ़ेगा, न्यूट्रोफिल्स का माइग्रेशन होगा टिश्यू में, और मैक्रोफेजेस आते हैं ताकि वो डेब्रिस को क्लियर कर सके वुंड के 2 डेज के बाद। प्रोलिफरेटिव फेज में इफेक्टर सेल्स है फाइब्रोब्लास्ट, मायोफाइब्रोब्लास्ट, एंडोथेलियल सेल्स, केराटिनोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस। कैरेक्टरिस्टिक्स इस फेज में होते हैं: ग्रैनुलेशन टिश्यू का डिपोजिशन होना, टाइप 3 कोलेजन का आना, एंजियोजेनेसिस, एपिथेलियल सेल का प्रोलिफरेशन, डिसोल्यूशन ऑफ क्लॉट,
एंड वुंड कॉन्ट्रैक्शन, और ये कॉन्ट्रैक्शन मायोफाइब्रोब्लास्ट कराते हैं। अब अगर विटामिन सी या कॉपर डेफिशिएंसी है किसी को, तो उनकी वुंड हीलिंग में सेकेंड फेज जो है वो डिले हो सकता है। तो इसको हम याद कर सकते हैं, विटामिन सी में जो सी है उससे और कॉपर में जो सी है, तो अगर ये दोनों डेफिशिएंट है तो सेकेंड में भी एक सी आ रहा है, तो अगर सी और सी ये दोनों डेफिशिएंट है तो सेकेंड फेज ऑफ वुंड हीलिंग डिले हो सकता है। नाउ रीमॉडलिंग में फाइब्रोब्लास्ट आते हैं इफेक्टर सेल्स, और रीमॉडलिंग फेज के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है, जो टाइप 3 कोलेजन आया था सेकेंड फेज में वो टाइप 1 कोलेजन से रिप्लेस हो जाता है, और टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ता है टिश्यू का। एंजाइम कोलेजनेसिस आता है जो कि टाइप 3 कोलेजन को ब्रेक डाउन करता है, और इस एंजाइम को जिंक चाहिए होता है फंक्शन करने के लिए। अगर जिंक की डेफिशिएंसी होती है तो ये फेज डिले हो सकता है वुंड हीलिंग में।